Vivek, please be on mute. Sir, what was the answer of the last question? That speed 7.2 7.2 kilometers per hour. Okay, sir. Thank you, sir. 2018. So 2018 paper, question number 39. A man started walking from village A to village B. Okay. So distance is unknown. He walked half the distance at 4 kilometers per hour speed and half of the other distance at 5 kilometers per hour speed. Okay. Total time taken to cover the distance is 9 hours. Find the distance. So the options are 9. Second option is 50 kilometers. Third one is 27. And fourth one is 20. Abhi see, looking at the options, we know that 9 to answer nahi ho sakta. Yes or no? Because to walk 9 kilometers, if he's walking at 1 kilometer at per hour also, he'll take 9 hours. But the speed is 4 and 5 kilometers per hour. Yes or no? Yes. Okay. So now what we can do, tell me. अगर option से solve करना है, we can do it option wise also. Yes, sir. That would. So first option is cancelled out. Let's check for this one. So अगर 50 का half करेंगे हम, तो we'll get 25 and 25. Okay. If now he is walking this at 5 kilometers, so time taken will be 5 hours. If we divide this by 4, this is more than 6 hours. Yes or no? 6 point some hours. Total time is only 9 hours. So is this the correct option? No. Understood? समझ में आया सबको क्या किया हमने? So half distance is walking at 4 kilometers per hour. Half of the other distance is walking at 5 kilometers per hour. तो अगर 25 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं तो कितना आएगा? 5 आवर्स लगेगा. और यहाँ मोर देन 6 आवर्स लगेगा, तो टोटल टाइम 11 आवर्स के ऊपर जाएगा. बट हमें टोटल टाइम कितना है? 9 आवर्स. तो इवन दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, आई थिंक द ऑप्शंस आर रॉन्ग ओवर हियर. ओके, अभी 27 किलोमीटर्स है. हाफ ऑफ 27 इज 13.5. 13.5. एंड यूर ऑल्सो 13.5. अभी 13.5 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.7 आवर्स. ओके, if we divide this by 5 and if we divide this by 4, we get 3.375 hours. देखो कुछ भी ऐड करके ये मैक्सिमम 6 पॉइंट समथिंग होएगा. यस और नो? तो 9 आवर्स तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है. तो इवन दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड आउट. लास्ट ऑप्शन इज 20. सो इफ यू डिवाइड दिस 20 into 2 different halves, so 10 and 10 divided by 5 divided by 4, so 2.5 and here 2. The total hour comes out to be 4.5 hours. Understood? Yes or no? तो देखो आंसर तो 9 hours नहीं आ रहा है किससे भी. So now the thing is, answer should have been 40 kilometers.
in all. Okay. Has everyone understood that the options are wrong? Yes, sir. अभी आंसर 40 क्यों है बताता हूँ. जब 20 किलोमीटर्स के लिए वी आर टेकिंग 4.5 आवर्स, सो वी हैव 9 आवर्स ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड वील चेक. 40 का हाफ किया 20 एंड 20, 5 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर आएगा 4 आवर्स और यहाँ आएगा 5 आवर्स एंड टोटल टाइम इज 9 आवर्स. अंडरस्टूड? सो योर आंसर शुड बी 40 kilometers. Is it clear? Yes, sir. और एक मेथड है सॉल्व करने के लिए. लेट्स यूज दैट मेथड. दिस इज फ्रॉम द ऑप्शंस. ओके, सो लेट द टोटल डिस्टेंस बी x. So half of the distance is traveled at 5 kilometers per hour speed and other half is traveled at 4 kilometers per hour speed. Understood? So time is equal to x by 2 divided by 5 and your time is equal to x by 2 divided by 4. ये समझ में आया सबको? Students, have you Yes. understood this working? Yes, sir. किसी को अगर Yes. डाउट है तो आप पूछ सकते हो. No doubts? Students, no doubts? No, sir. No, sir. No, sir. Now this is the total time. So x by 2 divided by 5 is what? X by 10. And other is x by 8. समझ में आया कैसे? x by 2 divided by 5 is Yes. equal to x by 2 into 1 by 5, which is x by 10. Same way with x by 2 and divided by 4. So this total time is equal to 9 hours. Yes or no? So we have x upon 10 plus x upon 8 is equal to 9. So LCM is what? 40. 40. 10 will go in this 4 times, so 4x plus 8 will go in this 5 times, so 5x is equal to 9. So we get 9x is equal to 9 into 40. So x is equal to 40. understood? ये मेथड समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Finished writing? No, sir. 1 minute.
Sir, done. Okay. A train 120-meter long speed is given as 45 kilometers per hour will cross a bridge of 80 meters length. Bridge is equal to 80 meters. You have to find time taken to cross the bridge. Okay. So total distance is equal to train plus bridge, which is equal to 120 plus 80. The total distance you have to cover is 200 meters. Speed is equal to 45 kilometers per hour. So either you convert this value to kilometers or this value to meters per second. So I'll consider meters per second into 5 by 18, 9 into 2, 9 into 5. So the speed is 25 upon 2 meters per second. Time is equal to distance divided by speed, which is 200 divided by 25 by 2, which is 200 into 2 upon 25. So answer comes out to be 16 seconds. I hope all of you have understood this type of sums, whether it is crossing a platform, a bridge, or a pole, electric pole, or a man standing on a bridge, or any other thing. Yes or no, students? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, done. Last question from this chapter today we are doing. Question number 19. This is from 2017 paper, okay? Same type of question hai. Train length is given 150 meters, okay? It will pass a bridge. Time is equal to 30 seconds to cross a bridge. And speed is equal to 40 kilometers per hour. You have to find length of bridge. Okay? तो अभी हमें क्या करना है 150
plus x is the total distance, which is equal to speed into time. अभी इसको भी मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करो. 40 into 5/18, which is 200/18, which is 100/9. So you have 30 into 100/9. Understood? Which is equal to 150 plus x. Now we have to find out to the nearest meter. Okay, nearest meter मतलब round off करना पड़ेगा because this is not completely divisible. तो अभी क्या हो जाएगा? 3 into 3, 3 into 10, 3 into 1, 3 into 33.33. Yes or no? So we have 150 plus x is equal to 333.33. Understood? So ये nearest क्या हो जाएगा? तो 333 minus 150 करो, कितना आता है आंसर? 1. Sir, 183. So this is the nearest one and it is given in the book as fourth option. Okay. Is this clear, everyone? Yes, sir. Okay, we will do one more question. It is related to relative speed. Okay. वो concept आपको याद रखना होगा for the exams. Have you please take a screenshot of this. Done, students? Yes, sir. Sir, can you please go to the previous slide for a second? Yes, sir. If two cars, train, person travel in same direction, okay, whatever the question is, what you have to do is speed has to be subtracted. Okay, ये बस नोट डाउन करो. अभी एक क्वेश्चन है, इस पे वो सॉल्व करना है. एंड इफ दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, you have to add the speed. Okay. Is it clear? Okay, so the question they have asked us is from 2017 paper, I think. Okay. It is question number 38. So what they have given is Paul is traveling from town A to town B. Okay. Paul is traveling from A to B and speed is 60 kilometers per hour. And the second person is Peter. हाँ बोलो ऋषिक, क्या डाउट है? Sir, what are you doing right now? I just lost my internet connection. Can you just repeat again? 2017 का क्वेश्चन 38 सॉल्व कर रहे हैं. Oh, okay.
Now, from reading the question, can you tell me whether they are traveling in same or the opposite direction? Opposite. Opposite direction. Very Or good. opposite direction. They start at same time, okay? And meet after 45 minutes. You have to find distance between A and B. अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 45 मिनट्स को पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे हम, ओके? डिस्टेंस बिटवीन A and B. Okay, so let's say A is over here, B is over here. We need to find this distance. पहले तो 45 minutes is how many hours? 45 minutes is equal to 3/4 3 of... by 4 hour. 0.75. नहीं, 3/4 रहने दो. I'll tell you why. अभी मैंने क्या लिखा था, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम स्पीड ऐड करेंगे, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. Speed is equal to 60 plus 80, which is 140 kilometers per hour. Time is 3/4 hour. What we have to find? Distance. Distance. Distance is what? Speed into time, which is 140 into 3/4. So what is the answer? 105 kilometers. Okay. Understood? Then students, Yes, sir. Sir, can you go to the previous slide 1 second? Thank you, sir. okay. So our next chapter is algebraic expressions. I think most of you have learned this chapter. And we'll combine this with simple equation, okay? Now, in your earlier school days when you were small kids, okay, so let's say they must give you box plus 15 is equal to 29. So how do you find the value of box? Box is equal to 29 minus 15, which gives you answer as 14. So what we did, this addition sign value goes on the other side as subtraction. Understood? Star multiplied by 4 is equal to 64. So star is equal to 64 divided by 4, which is 16. So when we have multiplication on the one side, on the other side of the equal to sign, it will go as division. Understood? Understood, students? Yes, sir. So you just need to remember this in equations, okay? Addition will change to subtraction and subtraction will change to addition as per the given question, okay? And multiplication changes to division when it changes the side and division changes to multiplication. ये basics आपको याद रखना है.
Okay. Yes, students. Understood? Yes, Yes, sir. Okay. Now you're not small kids, so they won't use a box, star, and all other faces. Okay. So what they'll give you is variables where they use alphabets. Okay. So variables में आप क्या use करोगे? A to Z. Anything which you want. Then there are constant. Constant का मतलब क्या होता है? Sir, it remains same, does not do change. not change. Yes, does not It change do not change. or remain same. तो क्या चीज अगर मैंने अभी लिख दिया यहाँ पर 4x, इसमें 4 कभी चेंज होगा क्या? नहीं ना। तो 4 जो है या जो भी नंबर्स है वो आपके कांस्टेंट हो जाते हैं। अब जो भी अल्फाबेट यूज करते हैं वो आपके वेरिएबल्स होते हैं, और ये दोनों को कंबाइन करके जब हम लिखते हैं तो वो हो जाता है आपका टर्म। तो टर्म इज एग्जाम्पल 4x और 15z। अभी इसका मतलब क्या होता है? 4x का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय x, एंड ये 15z का मतलब है 15 मल्टीप्लाइड बाय z। हाँ स्नेजा बोलो। Sir, what if it is only x plus 15? Then x will be one term and 15 will be another term, right? हाँ फिर अलग हो गया, वो पूरा वो अलग हो जाएगा। करेक्ट, वो भी एक टर्म Okay, कहते sir. हैं 15 प्लस एक्स, 15 प्लस वाई, जो भी है। तो ये बेसिक सबको समझ गए इक्वेशन के? Yes, sir. जिनको नोट डाउन अगर करना है तो प्लीज सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया तब भी चलेगा। Sir, can you just go to the last slide for 1 second, please? Okay, sir, thank you. Sir, I'm done. Okay. So here 15z plus 4 is equal to 64. So first step is 15z plus 4 is 64, आप as it is लिखोगे. Plus 4 will go on the other side for subtraction. So you'll get 15z is equal to 64 minus 4, which is 60. And now 15 into z is equal to 60. So z is equal to 60 divided by 15, which is 4. Understood? Yes, समझ sir. में आया? Now algebraic expressions is also same, but there is more without finding the value of the given variables, we need to solve the equation. Okay, so let's say they will give you 15z plus 29y minus 14x. okay, इसको हमें ऐड करना है with 19x minus 12y plus 4z. This is what algebraic expressions questions will be. So अभी आपको मैच करना है 15z with 4z, तो दोनों प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, बीच में भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा 19z.
प्लस साइन, 29y इज प्लस एंड माइनस 12y, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 17y। अभी 14x है और यहाँ पर कितना 19x, सो विच इज ग्रेटर, 19x इज ग्रेटर राइट। तो क्या करोगे आप, 19x माइनस 14x विच इज 5x विच इज पॉजिटिव, सो आप लिखोगे प्लस साइन एंड 5x। अंडरस्टूड? बेसिक समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का? Yes, sir. हाँ, प्लीज नोट इट डाउन। Yes, sir. Yes, sir. Sir, then that simple equation and quadratic equation and some kind of difference. Yeah, quadratic equation is totally different. There also we have to find the value of x only, but the questions are not so easy. जो यहाँ simple equation में जो पूछा जाता है. Okay. Okay, sir. That chapter we'll do it separately only, not with any other chapter combined. Okay. For Okay, that sir. we need to give more time. Sir, but we also have to complete geometry chapters. हाँ, so I think देखो अभी simple equation, 1 minute, let's check the portion. Simple equation and algebraic expressions एक और एक next class में हो जाएगा. उसके बाद angles, polygons can be done together. Then we have what, perimeter, volume, that we'll do in, and we are taking 2 hours or 1.5 hour class, right? तो उसमें तो cover up हो जाएगा. How many classes we have now? See, we have time till, let's say we take till 31st March. So 4 and 5, 9 classes are there. Okay. So 9 into 2, 18 hours even if you consider, or 15 hours. तब भी हो जाएगा सब chapter. Don't worry about it. Next week we'll Okay, complete sir. these 2 chapters. Okay. Then we'll take angles, polygons on 16. We'll complete geometry first if you want, and then we'll take quadratic. Don't worry about it. And if required, I'll take classes on Sunday also, if required. चलो हो गया ये कॉपी करके। अभी हम कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको आइडिया आएगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क यू इन एग्जाम। ओके, ओके। अभी देखो 2022 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो क्वेश्चन पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 17। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई the two given equations. Okay, so first one is 15x minus 8y multiplied by 4y plus 3x. Now I'll explain you how to multiply this. Either you rearrange these terms. Okay, now see, when addition is there, rearranging is easy. If subtraction is there, then you need to remember, okay, how to rearrange. तो अभी हम इसको rearrange करके लिखेंगे 15x minus 8y as it is. सेकेंड वाले को हम लिखेंगे 3x plus 4y, बिकॉज एडिशन में वैल्यू चेंज नहीं होगा। करेक्ट। अभी आपको क्या करना है, 15x से 3x को मल्टीप्लाई करना है। ओके, 15x इंटू 3x क्या हो जाएगा बताओ मुझे। सी 45x, 45 45 स्क्वायर। वेरी x गुड, square. Yes, x square. विल राइट हियर 45x स्क्वायर। अभी प्लस साइन है बीच में, तो 15x इंटू प्लस 4y। जब प्लस है तो याद रखना है, और जब माइनस है तब आपको ध्यान देना है साइन चेंज का। तो 15 इंटू 4 60, x इंटू वाई एक्स वाई। xy. Sir, 45x squared minus. रुक जाओ, डोंट गो अहेड। ओके, बस उतना ही करो जितना अभी हम लिख रहे हैं स्क्रीन पे। 15 के साथ हो गया सब मल्टीप्लीकेशन। नाउ टेक विथ 8y। नाउ इट इज विथ माइनस साइन, so you should remember minus 8y into 3x, तो क्या हो जाएगा minus 24xy। अभी xy कॉमन है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आप लिखो minus 24xy, फिर minus 8y into 4y, so क्या आएगा minus 32y स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे आप minus 32y स्क्वायर। अभी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल कम एज इट इज 45x स्क्वायर प्लस 60 माइनस 24 इज 36xy माइनस 32y स्क्वायर। समझ में आया?
Students, have you understood? अच्छा, अभी आपको मेन चीज क्या सीखना है, ये देखो, ये क्वेश्चन से हम वो चीज सीखेंगे अभी कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ओके, सो अभी 4x इंटू 4y किया. अभी x और y डिफरेंट वेरिएबल है, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू, सो व्हाट वी राइट इट एज 16xy एज इट इज, बस उतना ही लिखेंगे. बट अगर वेरिएबल सेम है, लेट्स से 5z मल्टीप्लाइड बाय 2z, तो z इंटू z तो z स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 10z स्क्वायर. ओके, अभी जब आप ऐड कर रहे हो, ओके, सो 4x plus 4y, here the variables are different, so we cannot add them directly, so the answer comes out to be 4x plus 4y, or you can write this as 4 into x plus y because 4 is common. Okay, but if you have the same variable, let's say 14z plus 4z, अभी z का वैल्यू तो सेम है दोनों जगह, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे z मल्टीप्लाइड बाय 14 plus 4, so what we get 18z. या आप इसको डायरेक्टली भी ऐड करो, 14 और 4 करके 18 हो जाएगा, z एज इट इज. समझ में आया? Yes. तो अगर वेरिएबल सेम है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हो, अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा. सेम वे इन मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, हम सिर्फ ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सेम रहेंगे वेरिएबल्स आपके x और y एज इट इज. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है आपको? No, sir. किसी को भी नहीं है ना डाउट? गुड. किसको ये पिछला स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. Sir, can you give us a small break? Only 5 minutes are left. There's no point of break. Today we are not taking till 9 o'clock or 8:45. इसीलिए 5-7 minutes are only left. वैसे तो मीटिंग को only 2 minutes are left. Okay. अभी तक सब समझ में आया क्या, जो ये 2 चैप्टर के बारे में हमने बात किया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, after this, do we need to rejoin again? No, I think only देखिए more 7 minutes के लिए rejoin करना, there's no point. Okay. So what we'll do is we'll end over here only at 8:07 or 8:10, जो भी होएगा अभी time, and then next week we'll continue with these 2 chapters. So basic concept आपको clear हो गए ये दोनों chapters के? Yes, sir. Please go through Yes, the sir. textbook once. Listen, please go through the textbook once. Okay. And next week I'll send the worksheet for these 2 chapters combined of 25-30 questions, or let's see how many are there, and then we will solve those. उसके बाद हम चालू करेंगे new chapter. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Now those who Okay, don't sir. have doubts can leave the class. Okay, I think Vivek, you have some doubts, so please wait and you'll have to rejoin. Bye, sir. Bye everyone. Bye, sir. Good night. Bye, sir. Good night. Bye, sir. Good night. Good night. Bye, sir. Bye everyone. Bye, sir. Bye. Vivek, the time is very less, so do one thing, rejoin the meeting. Okay, those who have doubt, rejoin the meeting.